So I think while we are approaching the festive season, इसके साथ साथ एक और एक थॉट प्रोसेस स्टार्ट होने लगती है कि भाई व्हाट नेक्स्ट इन द कमिंग ईयर 2026 में क्या क्या हो सकता है जहां पे हमें वी शुड बी थिंकिंग एट। तो स्मार्ट गैजेट्स की अगर बात करें इस इंडस्ट्री में, पीपल हैव बीन नाउ थिंकिंग फॉर मेनी इयर्स व्हाट नेक्स्ट, व्हाट्स आफ्टर स्मार्टफोन्स। देखिए हमने बहुत ट्राई करी टैबलेट्स को, वेरेबल्स को, कि उनका अडॉप्शन हो मैस लेवल पे, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रहा है। यूजर्स नहीं, दे डोंट फाइंड वैल्यू इन इट। स्पेशली आई थिंक जो एक बेंचमार्क स्मार्टफोन ने खड़ा करके रखा है, when people kind of compare and see, do I get the similar kind of return on investment? So that is where these devices don't stand up to, or users के माइंड में एक डिससेटिस्फेक्शन आ जाती है, नॉट इन टर्म्स ऑफ उसकी एक्सपीरियंस एंड यूजेज, बट इन टर्म्स ऑफ व्हाट डू दे गेट, व्हाट इज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ऑफ कोर्स यस, मुझे लगता है स्मार्ट टीवी इज वन थिंग कि जहां पर इट हैज बिकम द डिफॉल्ट, चाहे नया लेना है या अपग्रेड करना, पीपल डू लुक फॉर अ स्मार्ट टीवी। सो यस, नो क्वेश्चन ऑन दैट। बट जहां तक बाकी गैजेट्स की बात है एंड बाकी स्मार्ट डिवाइसेस की बात है, it's not yet become kind of the default thing. Tablets, I think we need to really find what is the purpose of a tablet, वो अभी भी नहीं मिल पा रहा है। सेम इज द केस विद चाहे वॉच है, बैंड है, जो भी चीजें हैं, बड्स हैं, they do have their specific use case, but it's not really at a mass level. Laptop की I think it's a different category altogether. Anybody and everybody who has to work has to use at least one compute device, तो वहां पे तो laptop is the device. तो what is that जो अब दिख रहा है कि भाई कुछ बन सकता है in between? Rings आए थे, again I don't see them becoming mainstream. So what is that which has some I would say potential? Now देखिए ये जो स्मार्ट आई वेयर की कैटेगरी इवॉल्व होती जा रही है, इट्स बिकमिंग एन इंटरेस्टिंग थिंग, एंड यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स भी दिख रहे हैं एज यूजर्स, तो विच आई फील could take it to a level कि it can become very much close to smartphones, if not equivalent to smartphones. And I will share some thoughts around it कि क्यों ऐसा लग रहा है। ऑफ कोर्स देखिए इसमें भी डिफरेंट कैटेगरीज है। अगर हम बात करें जो स्पेशली वर्चुअल रियलिटी डिवाइसेस हैं जो कि गेमिंग में हम यूज करें या कुछ और सिनारियोज में यूज करें, वहां पे मुझे थोड़ा अभी लिमिटेड यूज केस लग रहा है। एंड वी हैव सीन दिस बेड एप्पल प्रोविजन और ऐसी और भी कुछ डिवाइसेस, वहां पे वी नो कि इतना अडॉप्शन नहीं हो पा रहा है, एंड इट्स नॉट कंफर्टेबल टू होल्ड टू वेयर इट फॉर लॉन्गर पीरियड, तो वो एक इशू रहेगा। बट जहां तक अब ये नई एक कैटेगरी इवॉल्व होती जा रही है, मेटा के आई थिंक रे बैन मेटा के बाद तो ये बहुत ही पॉपुलर बनता जा रहा है, दैट वी हैव दिस आई वेयर जो कि बिल्कुल एक स्पेक्टिकल की तरह है, एंड पीपल लाइक मी आर ऑलरेडी यूजिंग वेयरिंग अ स्पेक्टिकल, और पीपल हु यूज गॉगल्स आर यूज टू वेयरिंग ऑन गॉगल्स, तो उनके लिए तो एक बड़ा नेचुरली डिवाइस है। सो देर इज नो एड ऑन, कोई नई डिवाइस नहीं है जहाँ पे, सो उस हिसाब से इट्स गोइंग टू बी अ बिट कंफर्टेबल, and the adoption is going to be natural that way. Now the point is, okay, ठीक है, usability, from the point of view of wearing them, okay, there is no add-on, there is no learning curve, but what is there in terms of use case कहाँ है इसका? So let's try to understand, और मैंने इसमें थोड़ा evaluate किया from maybe benefits to use cases, दोनों चीजों पे थोड़ा सोचने की कोशिश करी in some recent time. So if we come first to the benefits, so देखिए what's happening now, we have been now continuously using smartphones like this and holding them for longer hours, be it doing some serious stuff for entertainment or for any other purpose. So holding phones for this much of time, definitely it after some time tires our hand, थोड़ा discomfort होने लगता है, and there are sometimes medical conditions also. तो बोन्स में पेन आने लगती है, मसल्स में पेन आने लगती है, देन सिंस वी आर लुकिंग लाइक दिस, तो नेक ऑल्सो हैज एन इशू, स्पॉन्डिलाइटिस होता है लोगों को आफ्टर यूजिंग फोन फॉर मेनी मेनी आवर्स। देयर इज ऑल्सो शोल्डर पोस्चर में भी प्रॉब्लम आने लगती है। So yes, holding it for like this is an issue, but honestly, I think we can't do without this. एक ऑल्टरनेटिव हो सकता है कि भाई वी यूज दीज स्लिम फोन्स, थिन फोन्स, क्योंकि ये लाइट है, तो
it may not result in the similar kind of wear and tear or issues as is with the regular phone. So yes, that is an alternative, but still it doesn't really eliminate the uh, problem or the potential problem. अब यहाँ पर अगर हम वी स्टार्ट यूजिंग an eyewear, smart eyewear, so we are completely hands free. So that's really great. It won't affect our posture. We can just be upright and consume our content. So that's something good about it. Yes, now the question might be about proximity of these glasses with eyes and for many hours. तो वो एक अभी एक gray area रहेगा. I think people would have concern around it कि how good it or bad it is. But nevertheless, मुझे लगता है कि जो एक कैमरा एडिशन आ गई इसमें या स्पीकर एडिशन, so those things are really good to see. And I think from both content consumption and content maybe creation point of view, ये device बहुत ही useful रहेगी. So that's more on the benefit side. Now coming on to the utility side, तो कुछ use cases बड़े interesting है. देखिए doctors के लिए this can be very handy. They can go hands free and start using this device. Similar case with engineers, architects, चाहे वो अपनी साइट्स को इंस्पेक्ट कर रहे हैं, अपना कुछ काम कर रहे हैं, तो दे आर वेरी हैंड्स फ्री. ऐसे बड़ा खतरा रहता है और दे आर होल्डिंग अ फोन इन देयर हैंड एंड वॉकिंग थ्रू वेरी एट टाइम्स वेरी डिफिकल्ट प्लेसेस. जो उनकी साइट्स होती हैं बड़ी डेंजरस होती हैं एट टाइम्स, तो बड़ा ही there are very thin passages, narrow passages to walk through. So it's very easy for them also. Now I have been watching our traffic policemen. They also have been in a very at times in a very difficult situation, क्योंकि हाथ में वो मोबाइल रहता है, वो भी मैनूवर करना पड़ता है, यहाँ से ट्रैफिक भी नेविगेट करना पड़ता है, तो उनके लिए भी बड़ा इजी है हैंड्स फ्री ऑपरेशंस. They can also manage the traffic in a very better way. Similarly, there could be many other use cases जो कि निकल सकते हैं इसके. I think banking में भी बहुत अच्छा use case आ सकता है. अभी I was reading a report, there is also a possibility शायद Lenskart is working on something कि we could make payments using the Eyewear. So very interesting use cases coming out, and I think this will keep on building. हम बहुत सारे use cases ऐसे ही देख सकते हैं, which is interesting. हो सकता है कल को sports में, umpiring में, referees, all of them would use these kind of smart eyewears, and they can very well do whatever they are doing, or they're umpiring or monitoring matches over there. So बहुत interesting आई थिंक यूज केसेस हैं वहाँ पर. और कभी ना बहुत टाइम ऐसा भी होता है कि वी वांट टू कैप्चर समथिंग, नॉट फॉर जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, बट मे बी समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. हमें कुछ ऐसी चीज मिलती है कि हम उसको स्पॉन्टेनियसली कैप्चर करना चाहते हैं, एंड दैट कुड बी यूज्ड एज अ प्रूफ ऑफ कहीं पर प्रूफ ऑफ एविडेंस समटाइम्स. तो मे बी दिस कैन हैव एन इंस्टेंट reaction time than us taking out our phone and instantly capturing something. So उन चीजों में भी मुझे लगता है this could be very useful. So for these reasons, I think benefits and use cases, and of course its natural adoption, I think for these reasons this is going to be an interesting category. And I can see whatever conversations I'm having with the ecosystem. We are actually working on a report on this. So whatever conversations I'm having with the ecosystem, it looks like yes, that these devices will be made available across different price points. So it will not be available, or it will not remain confined to only a particular section of the economy or society. It will be available across sections, so which is great. So that's where I feel that yes, this device has the potential of becoming very close or coming very close to smartphones in terms of adoption, and it will of course complement it. So this is what I had to share with you in today's TechByte. Let me know your thoughts. What do you feel? आपको लगता है कि Eyewear, smart Eyewear will pick up? Will you be using it? आपके क्या apprehensions हैं about smart device, smart Eyewear? That's what I want to understand. Would love to have feedback, conversation on this topic as usual. And this is going to be the last video before Diwali. So I wish you all a very happy Diwali.